Bonjour mes étudiants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. So, students, today I have decided to cover some habits about food, Francis people, and so I've decided to choose this paragraph, and I hope you will be discovering so many foods, French foods here, and how they eat, the foods in French. So the title is Les habitudes alimentaires françaises. Les habitudes alimentaires françaises. This means French people, the food habits of French people of France. Read the following piece written by Nadine, students in France, and complete the task below. So we will be just reading the paragraph here, and I just would like to tell you that this paragraph is a bit bigger, so you stay with me up to the end of this video, and I'm pretty sure that you will enjoy and you will be having so much vocabulary about this lesson. So I try to read first in French, then afterward I will be giving you translation in English and somehow somewhere in Urdu as well. So, beaucoup de mes amis dans d'autres pays m'ont demandé ce qu'on mange ici. Beaucoup de mes amis dans d'autres pays me demandaient ce qu'on mange ici, en France. Exactly, this girl's name is Nadine, and she wrote about her habit, food habit, eating habit, and she's describing to so other Franceses habits, how they eat X, Y to their friends. So she's writing in a paragraph, in article type. So she's writing, beaucoup de mes amis dans d'autres pays m'ont demandé ce qu'on mange ici en France. Many of my friends ask me from the different countries that what we eat here in France. Tous les pays ont leur restaurant français très chic. And this means tous les pays ont leur restaurant français très chic. All the countries have their own French restaurants, those are very stylish. Mais souvent, les gens ne savent pas ce qu'on mange dans la vie. Mais souvent, les jeunes ne savent pas ce qu'on mange dans la vie. And now the sentence means that often, but often, the people don't know what they eat in their daily routine, la vie quotidienne in their daily life. Je me servirai de cette rédaction pour décrire manger à la française. I will use this writing to describe what French people eat. Bien sûr, well sure, il y a 50 ans, 50 years ago, la plupart des gens mangeaient des repas traditionnels. This means sure, well sure, 50 years ago, the most of people used to eat traditional meal, de repas traditionnels, you can see. Mais les modes de vie modernes ont beaucoup changé. But now the mode of modern life has changed a lot. Then she says, alors, then. Je ne peux pas parler pour chaque Français ou Française. Here she said, then I can't speak about each French, either male or female. Je décrirai plutôt les habitudes de ma famille et des jeunes, des jeunes que je connais. She says, I will describe rather the habits of my family and the people I know. In the second paragraph, she says, je crois, French पे कहते हैं, I believe. Je crois que le plus important, c'est que nous, les Français. This means I believe that the most important for us, for Francis people, on adore tout ce qui est nourriture. We love everything. We adore tout ce qui est nourriture, whatever is food. We love every food, this means. On aime faire la cuisine, हम खाना पकाना पसंद करते हैं basically. On aime faire la cuisine, on aime manger, we like to eat. On pense à la famille et les amis qui s'amusent ensemble.
Whenever we think about family and the friends, when they have fun, c'est surtout à la table. It will be only on the table. So this is their tradition, and this sentence says quand on pense à la famille et les amis qui s'amusent ensemble, c'est surtout à la table. This means इस sentence में ये कहना चाह रही है कि जब कभी family और या दोस्त जो है वो मतलब enjoy करने का सोचते हैं तो टेबल पर ही होता है, c'est surtout à la table. Je crois aussi que les Français mangent plus de pain et de fromage que bien d'autres jeunes. She said, I believe also. Je crois, I believe aussi, also, que les Français mangent, that French people eat, French eats, plus de pain, more of bread. Pain, bread, को कहते हैं, du fromage et du fromage and cheese, que bien d'autres jeunes, rather than the youngs from other regions or from other countries. Il y a plus de 300 variétés de fromage faites en France. You believe this? Believe me, this sentence is a bit, shocking or a bit surprising for us. This means il y a plus de 300 variétés de fromage faites en France. There are more than 300 variety of cheese, fromage, made in France. यहाँ तकरीबन को 300 से ज़्यादा चीज़ की varieties बनाई जाती हैं फ्रांस में. Et j'espère un jour les goûter tous. And she said that I hope to test all of them uh, one day. I hope that one day I will test all of them. Puis la boulangerie du quartier garde encore son importance dans le voisinage français. Then the bakeries of areas, they always keep the importance, the important things for the neighborhood. And the third paragraph is starting from en fait. En fait, this means in fact. En fait, en effet can be. So, le marché du quartier est toujours très important aussi. Then, in fact, the district market, the market which is located in area is always more important. Chaque jour, chaque French में कहते हैं हर, each, every. Chaque jour, every day de la semaine of the week, on peut trouver un marché à Paris pour acheter des fruits frais, des légumes, de la charcuterie et bien d'autres aliments aussi. This means every day of the week, we can find a market at Paris where we can buy, acheter, buy fruits frais. Des fruits frais means fresh fruit, des légumes, vegetables, de la charcuterie, and meat items, especially meat from the pork meat, charcuterie, pork meat, et bien d'autres aliments aussi, and we'll share other food item also. So basically, aliment French में food items को कहते हैं. You can see here, aliment, it's written on the food, it can be food item. Now let's read the next paragraph, again starting from Je crois qu'en France, I believe in France, I believe that in France. Il y a encore de grandes différences entre les plats et la nourriture de chaque région. इस सेंटेंस में ये कह रही है कि आई बिलीव कि फ्रांस में बहुत डिफरेंस है उनकी अपनी डिशों में जो मुख्तलिफ रीजन के की होती हैं. If I make it this in English, so I will try. So we can say that like I believe that in France there are still great differences between the dishes and the food from every region. Ici à Paris, here in Paris, nous aimons visiter des restaurants pour goûter des plats typiques de la Normandie. So she says here in Paris, we like to visit restaurants to taste, goûter, test करने को, today we're going to test something, goûter des plats typiques, typical dishes de la Normandie. The Normandy is a key,
region in Second World War. So this is Normandy. De la Provence, another region, which is called also Provence in French. It basically its name is Provence. It's also a region, ou Languedoc, and that is another region. So the whole sentence means ici à Paris, here in Paris, nous aimons visiter des restaurants pour goûter des plats typiques de la Normandie, de la Provence, du Languedoc. She says here in Paris, we like to visit restaurants for to taste different typical dishes from the Normandy, from Provence, and from Languedoc. Chaque coin du pays fait des spécialités de leur région. Un festival gastronomique pendant l'année. This means every corner of the country, they whenever they have a festival, they make their specialties about their region in gastronomic festival during the summer. Alors, then une journée typique. Now she's describing a normal typical day, what she take actually. And then she said, le petit déjeuner est généralement assez repas léger. So le petit déjeuner, French में कहते हैं नाश्ते को. Le petit déjeuner est en général un repas assez léger. So normally the breakfast is breakfast. In the breakfast they have enough light food, leisure, assez enough light food. तो उर्दू में इस तरह हो सकता है कि ब्रेकफास्ट में वो काफी हल्का मतलब है कि नाश्ता करते हैं. एंड उसके बाद हम यहाँ से देखें, nous prenons une tasse ou un bol de café au lait et de pain avec du beurre et de la confiture. Nous prenons, we take. Prenons is a conjugated verb of prendre. Recall prendre, P-R-E-N-D-R-E, prendre. So she said, nous prenons, हम लेते हैं, we take, une tasse ou un bol de café au lait. A cup or a bowl of milk coffee. यानी वो एक कप भी ले सकते हैं या एक बड़ा bowl milk coffee का लेते हैं. Du pain and some bread avec du beurre, with the butter, et de la confiture, और jam के साथ, ठीक है, tout en se lavant le matin. Everyone, everyone once they get up in the mornings, mon अभी example दे रही है, comma के बाद, mon père va à la boulangerie. My father goes to the bakery, acheter du pain for buying some bread. Full stop. Now, des fois means sometime, कभी कभार उर्दू में कह सकते हैं. Des fois, il achète des croissants. Sometimes he buys some croissant. Croissant. So basically, croissant जो है French bakery का item है, French traditional dish है. Ou des brioches and buns जो हमारे बन होते हैं, जो सुबह normally लोग खाते हैं, कि on prend avec le café, जो कि वो कॉफी के साथ लेते हैं. J'ai des amis qui mangent des céréales. Now she said that I have some friend who eat cereals, du yaourt, yogurt, et du jus de fruits pour le petit déjeuner, and some fruit juice for the breakfast. So this sentence means that she has a friend, j'ai des amis qui mangent des céréales, du yaourt, et du jus de fruits pour le petit déjeuner. So she said that I have some friends who take cereals, yogurt, some yogurt, and some fruit juice for the breakfast. C'est très bon pour la santé. Now she said it's very good for the health. Say this is, yeah, it is. Très means very bon pour la santé, good for the health. Mais je préfère le pain au chocolat. But she prefers, because she's writing, Nadine is writing, then she said, but I prefer to take milk to le pain au chocolat. It's basically donut. Le pain au chocolat. So afterward, we will be covering the vocabulary, what you can see on the right hand side of the screen. Let me cover more paragraph.
Stay with me, please. Traditionnellement. Now she is telling about something more about the habits of French people. She said traditionnellement, traditionnellement, traditionally, les Français rentraient manger un grand repas à midi. French people, come back at home and they take big breakfast. Sorry, they take big lunch. Les Français rentraient manger un grand repas à midi. So ये यहाँ पर बताना चाहिए कि फ्रांसीसियों की आदत है कि अगर वो बाहर काम करते हैं और घर नजदीक हो तो वो घर आके लाजमी खाना खाते हैं और बहुत जबरदस्त यानी बिग जो है लंच लेते हैं. Les Français rentraient manger un grand repas à midi. Midi means to know. C'était le repas le plus important de la journée. And this was the most important dish of the whole day. यानी जो दोपहर में खाते हैं वो उनके सारा दिन के लिए चलता है. So इसलिए कह रहे हैं c'était basically it is imperfect tense. This means it was. So c'était ये basically बता रही है लिख के दूसरों को. तो she said that this was the most important food for all the day du la journée. Cela continue à la campagne et dans de petites villes. Now she's expanding this, sentence, and she said it continues at the countryside, à la campagne, et dans de petites villes. और ये बड़े कंट्री साइड में भी एरियाज में भी होता है, छोटे शहरों में भी होता है. Dans de petites villes, dans de petites villes. This means in the small cities. Ville, French में cities को कहते हैं. Mes amis à la campagne continue à déjeuner en famille à la maison. Now she said my friends at the countryside, यानी उसके जो फ्रेंड कंट्री साइड पे रहते हैं वो कंटिन्यू करते हैं लंच में फैमिली के साथ घर पे खाना. ठीक है. mes amis à la campagne continuent à déjeuner en famille à la maison. So कंट्री साइड वो इस तरह के एरियाज होते हैं कि नॉर्मली वहाँ लोग कुछ कैटल वगैरह का रखते हैं तो वो घर में इजीली दोपहर में आ जाते हैं. तो वो कह रही है कि दोपहर में वो सब आके एक साथ खाना खाते हैं और अपनी फैमिली के साथ. Mais ici à Paris, now she's sharing Paris people's habit. So, but here in Paris, les jeunes travaillent ou vont à l'école loin de chez eux. So, यहाँ पर लोग जो काम करते हैं या स्कूल जाते हैं अपने घरों से दूर. Donc, ils mangent au travail ou à la cantine. Donc, donc comme फ्रेंच में मतलब है इसलिए, therefore, so, hence वगैरह. So donc ils mangent au travail ou à la cantine. तो लिहाजा hence they eat at the work, au travail at the work, or at the canteen. Now full stop. Then she said, je prends des sandwiches. अभी अपनी habits बता रही है. I take the sandwiches, une salade, une quiche, a salad and a quiche. Parfois, means sometimes, कभी कभार, parfois. Je prends un hamburger ou une pizza. I take a hamburger or a pizza. Le dimanche, अब संडे की बात बता रही. Le dimanche, on Sunday, ma famille prend un beau déjeuner ensemble. मेरी फैमिली लेती है एक बड़ा लंच यानी अच्छा लंच together. My family takes a good lunch ensemble means together. Parfois, on invite de la famille et des amis. Sometimes we invite families and some friends. Full stop. Quand les Français déjeunent à la maison. अभी बता रही जब फ्रांसीसी घर पर खाना खाते हैं déjeunent. ठीक है. It's a plural verb and regular verb déjeuner and they are talking. It's basically conjugated for the third person plural. Quand les Français déjeunent à la maison. When the French eats and at their houses en général. In generally, ils prennent une entrée comme une salade. So they take as into, as the starter. Starting में वो as a starter वो क्या लेते हैं salad. ठीक है. De la charcuterie or meat item from the pork. ये उनके religion में जायज है तो ये लेते हैं. Ou des pâtes and the pastries. Then ensuite, following यानी इसके साथ il y a le plat principal. यहाँ पर एक मेन डिश भी है. There is a main dish.
मेन कोर्स जिसको आप कह सकते हैं. So फ्रेंच में मेन कोर्स को कहते हैं le plat principal avec des légumes et de la viande with the vegetable and some meat. This beyond is this meat is coming from the the cow. So the जो कि इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग इस तरह हो सकता है following the as a main course they take vegetables and the meat. De la volaille, du poisson, des œufs. उसके अंदर some fishes होती हैं, eggs होते हैं, XYZ. Then ensuite again following il y a du fromage, on termine avec des fruits. तो यहाँ पर चीज भी होता है और वो जो है on termine और they end यानी वो अपना लंच एंड करते हैं avec des fruits, फ्रूट के ऊपर यानी आखिर में फ्रूट करते हैं. और boire de l'eau, पानी भी पीते हैं. they eat some water, du vin, wine, des boissons gazeuses. और वो फ्रीजी ड्रिंक्स भी कहते हैं जिसको हम लाइक कोका कोला, 7 अप वगैरह वगैरह. ठीक है. सो दे ईट दिस टाइप ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं फ्रेंच में boissons gazeuses. फुल स्टॉप. Les Français adorent les desserts. फ्रांसीसी जो है मीठे को पसंद करते हैं, मीठे को जुनून के तक पसंद करते हैं. Les Français adorent les desserts. Les desserts comme le gâteau. French adores dessert like cake, comme le gâteau, like cakes, I should say. Le crêpe et les tartes. Crepe, it's one of the famous, very famous traditional dish. Crepe जिसको कहते हैं, et les tartes और ये tart. Mais normalement, but normally, c'est pour des journées spéciales. But now she's add and she said, but normally it's for the special days. Après, I know it's a bit big, but I'm pretty sure it will help you a lot to give the test of DELF A2, and even this can work for B1 level because it's a bit advanced. Après l'école, now she is sharing about her experience after the school. Après l'école, after the school, ou vers 4 heures de l'après-midi, or around 4 o'clock of the afternoon. यानी कि ये स्कूल के बाद या तकरीबन 4 बजे जो शाम के होते हैं, दोपहर के बाद. Les enfants prennent le goûter. So children take the snack. तो वापस आके चिल्ड्रन चाय वगैरह स्नैक लेते हैं. Si je suis chez moi et j'ai faim. There is a mistake, I suppose. This question mark should not be here, so we can. Sorry, I cannot cut, but there should be apostrophe. So she said, si je suis chez moi. इसका मतलब है if. Si means yes. If I am at home, if I am at my home, et j'ai faim and I am hungry, je prends du café et des tartines avec du beurre. I take coffee and tartine. This it's a French dish. We will cover the translation a bit later. Avec du beurre with butter. De la confiture with jam ou de miel and with honey. Miel is honey. Si je ne suis pas à la maison, अगर मैं घर पर नहीं हूँ, if I am not at my home, j'achète un poisson et un jus de fruits, and I buy a croissant and fruit juice. तो ये यहाँ पर कह रही कि अगर मैं घर पे नहीं होती हूँ तो मैं croissant खरीदती हूँ, एक फ्रूट जूस खरीदती हूँ. उसके बाद j'ai des amis qui suivent un régime. अब ये बता रही कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कि डाइट फॉलो करते हैं, यानी डाइटिंग पर हैं. Et ne mange que du fruit et un yaourt pour le goûter. तो उनके बारे में बता रही है कि वो only, ne que mange the expression, this means only. So they only eat, yogurt or some fruit juice. अब यहाँ आ जाए लास्ट पैराग्राफ है, देन आफ्टर वन लाइन हो रहा है. nous on dîne vers 8 heures du soir. अभी बता रही है कि हम लोग तकरीबन 8 बजे जो है वो रात का खाना खाते हैं. Pour beaucoup de familles françaises, for lots of French families, le dîner est devenu le repas le plus important de la journée. अभी बता रही है कि for most of French families, the dinner is becoming more
most important of the day. Il y a l'entrée, there is starter, le plat principal, main course, et fromage slash fruits comme j'ai décrit pour le déjeuner. ये बता रही है यहाँ पर जो है एज ए स्टार्टर स्टार्टर होता है, कोई सलाद भी हो सकती है, मेन कोर्स भी होता है, चीज भी होता है और फ्रूट, जैसा कि मैंने लंच के लिए ऊपर बताया था. Parfois, ma famille sort manger dans un restaurant italien ou chinois. तो अब ये बता रही कि कभी कभार मेरी फैमिली जो है रेस्टोरेंट इटालियन या चाइनीज रेस्टोरेंट चली जाती है. On aime beaucoup la nourriture marocaine aussi. और वो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम लोग जो है मराकश की डिशें भी काफी पसंद करते हैं, मोरक्कन डिशेज. Enfin, enfin का मतलब है at the last, enfin. J'espère que ce renseignement vous ont intéressé. Du coup, m'ouvre l'appétit. Allez, on mange. एंड में कह रही है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इंफॉर्मेशन जो है आपको बहुत इंटरेस्टेड लगी होगी और अब जो है इसने मेरी भूख को जगा दिया. ओह, चलते हैं खाने. Merci, au revoir, à bientôt. No, no, stay with me. Just give me one more second and read with me the word and their meaning. So, l'aliment. I will be reading only in French. You can see the, writing in English. La boisson gazeuse. La boulangerie. Ça m'ouvre l'appétit. That gives me an appetite. Du quartier. Quartier is, district, local. Du coup, suddenly. En famille, with the family. Fêter, to celebrate. La nourriture, the food. La plupart, the most of the people, the majority. La rédaction, any writing essay. La santé, health. La tasse, le coin, corner. Tasse means cup. Le plat, dish. Le régime, diet. Le voisinage, neighborhood. Les habitudes, parfois plutôt quotidiennes, les renseignements, rentrer, suivre, tout en seul langue. Donc, that is the end of the lesson. Please update me about your understanding. If you think that something you didn't understand well, you can feel free to guide me through your remarks, through your comments underneath of this. Thank you very much for being online with me, and I will be available every time for you guys. Merci, au revoir, bonjour. Please don't forget to subscribe my channel. Bye bye, take care.